Good morning, all of you. Can you all hear me? Hello? Yes? Good morning, sir. Okay, good morning. Is the voice clear? ठीक है ना? Okay. See, today we'll be doing sums based on refraction of light. That is the name of the chapter, which is optics. Now, optics comprises of two chapters inside. I have divided that chapter into two parts. I'll just do the basic formula. Optics comprises of two parts. One was refraction and other is reflection. I can make it more broader. Okay, whatever we have done, it's refraction of light. Reflection is still left, which will be done after your vacations. So I'll be only discussing formulae based on what's sir? Refraction of light. No. Basic formulas you all must have learned also. Hello, are you all there? No? Yes or no? Okay, listen to me. So refraction of light. सबसे पहले in that we have learned Snell's law. Mu is equal to sin I upon sin R. What is I? Angle of incidence. R, angle of refraction. Mu is the refractive index. It could also be written as the refractive index of second medium with respect to first medium. Is velocity of light in first medium to velocity of light in second medium. Wavelength of light in first medium to wavelength of light in second medium, which could also be written as refractive index of second medium upon refractive index of first medium, which could also be written as sin of I upon sin of hello, which could also be written by reversibility principle as 1 upon 2 mu1. Are you all getting it? Hello? Hello, yes or no? Yes, sir. There is another formula for Snell's law which also we can use, that is mu1 sin I is equal to mu2 sin. Mu1 is the refractive index of the first medium. I is the angle of incidence. Mu2 is the refractive index of the second medium, and R is the angle of refraction. In this, we have learned also one formula, that is mu is the real depth by what depth, beta? Apparent depth. This we are going to use. Similarly, we had learned something called as critical angle. That is defined as the angle of incidence in the denser medium, for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. So what is the formula for sin C? 1 upon refractive index of denser with respect to rarer. That is mu D upon mu R. Just remember this thing, please. All is proved in the theory, which I have given it to you as video lectures. After this, so if this is over, this is given in your digest. Everything is given in your digest in the end, formulas, important formulas. After that, we had done something called as prisms.
prism, the incident ray, angle of incidence, angle of refraction at first phase, angle of refraction at the second phase, angle of emergence. And if I extend the incident ray back and the emergent ray back, this angle is called as angle of deviation. Hello, yes or no? This angle A was angle of the prism, if you remember. The refractive index, iska formula, which is very famous in prisms, is I plus E, A plus delta. What is I? Angle of incidence, emergence. A is the refracting angle, delta is the angle of deviation. When I talk about minimum deviation, it will become mu is equal to sine A plus delta M divided by 2 upon sine A by 2. Because if I know at minimum deviation, the graph is going to become, if you remember the graph, is delta versus I. It is this way. Can I say at minimum deviation, I will become equal to E? Okay. याद आ रहा है? Hello. So at minimum deviation, I will become equal to E. R1 will become equal to R2 is a common name R. So A will become, A का formula याद है ना आपको, R1 plus R2. So but A will become equal to 2R. And I will become A plus delta M divided by 2. These are all important concepts which we have learned with the proof in the video lectures. Similarly, if I talk about thin prisms, thin prism कौन सा होता है जिसका refracting angle is very small. This is very small. A is small. So delta का formula will become A mu minus 1. This is angle of deviation. पता ही रहेगा. Then we have done some concept called as dispersion. Dispersion में, hello, yes or no? We have learned a term called as angular dispersion. Is AD, that is deviation of violet minus deviation of red, because violet deviates the most. So delta is A mu minus 1, तो इसको जब substitute करेंगे, you will get A mu V minus mu R. This is called as angular dispersion, which is asked in the examination. If I ask you what is the mean deviation, it will be written as deviation of extreme colors का mean. So delta V plus delta R divided by 2, and this numerically comes up to be the yellow color. Similarly, if I ask you what is dispersive power, मोड़ने का ताकत, that is omega. That will be delta V minus delta R upon delta Y. That is mu V minus mu R substitution, and it will become mu Y minus 1. When mu Y is yellow, yellow ka refractive index will become mu V plus mu R divided by 2 because it is of the mean color. These sub formulas are based on refraction. Hello, can you all hear me? Can you all hear me? Yes or no? Yes, sir. So we have done all the formulas of optics and refraction of light. I'll be doing some couple of sums so that you all can understand, and
finish the chapter directly after the exams, after the this vacations. Okay, you need to give the exam of refraction of light. This one, only the small part of optics. It is divided into two parts, as I told you. So first part ka exam will be there, and I'll be giving you 3 to 4 videos to watch during the vacations. Okay, it is 3 to 4 hours. So every day you can watch half an hour, or you can finish it off at one stretch only. The chapter name will be rotational motion. We have finished with circular motion. We will be doing, you all will be doing rotational motion during the vacations, and after you all come back, we'll be doing numericals of both the chapters. Okay, you all can enjoy, but every day half an hour you need to watch the videos. Now we come to question number 9 of your this whatever GTB. Thickness of a glass spectacle is 2 mm. Refractive index of the glass spectacle is 1.5. Calculate the time taken to cross the thickness. Express your answer with most convenient prefix attached to the unit seconds. So seconds में unit करना है. Suppose this is a glass spectacle. How much is the thickness? 1.5. And इसका refractive index is how much बच्चा? Oh sorry, refractive index is 1.5 and thickness is going to become 2 mm. 2 mm. Hello. And light passes the spectacle. So this is glass, na beta. Can I say when the light goes in air, this is air. How much is the speed of light? C? Hello? Hello? But when it goes inside glass, will the velocity increase of light or decrease of light? Batao. Hello? When it goes in the glass material, the speed of light will become less or more. Jaldi batao. Yes or no? Yeah, please tell me. Less. Yeah, it will become obviously yes. Now, how much less it will become? Formula hai refractive index. Refractive index is velocity of light in air to velocity of light in medium. Can I say velocity of light in medium will become V air by mu? V air is 3 into 10 is to 8 and mu is what? 1.5. So this will become velocity in medium, that is velocity in glass. Speed in glass will become 2 into 10 raised to 8 meter per second. तो जब वो बाहर था ना लाइट तो उसका स्पीड था c, दैट वाज 3 into 10 is to 8. बट जब वो ग्लास में चला गया उसका स्पीड हो गया 2 into 10 raised to 8 meter per second. Do you understanding or not? हेलो, अब हमको मांगता है टाइम टेकन. कैन आई से टाइम टेकन टू पास थ्रू glass slab is distance in glass slab by speed in glass slab. The time taken in glass slab is speed, distance in glass slab. How much is the distance in glass slab? 2 mm. Speed in glass slab is 2 into 10 raised to 8. This and this will cancel. 8 ऊपर जाके 10 raised to minus 11 seconds. Hello? 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 Yes or no? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 raised to minus 2 nanoseconds. 0.01 nanoseconds is the time taken by the light to cross the glass slab. Hello? Hello? Yes, sir. इसका एक trick है which is generally asked in the NEET or the JEE.
Always remember, time taken to pass through glass slab is mu x by c. या mu t by c. What is mu refractive index? What is the x? क्या है ये? तो ये डायरेक्ट है रिजल्ट. And what is c का वैल्यू? हेलो, समझा क्या? If you remember the trick, it will become better for you. The formula becomes mu x by c, mu x by c, mu x by c. Remember, mu x by c. Getting it? Hello. Yes, sir. ठीक है. A couple of sums only. Please pay attention to me. There are only 6-7 questions, and the chapter will get over. I have sent some extra questions also. You all can refer to that also. Okay. Question number 10. A monochromatic light strikes the water surface in a cylindrical vessel at an angle of incidence 53 degree. Depth of the water is 36 centimeter. After striking the water, how long will the light take to reach the bottom of the vessel? Angle, ठीक है, Pythagorean triangle वो तो आपको पता ही है, 37, 53, 90. ये क्या बोल रहा है? There is a cylindrical vessel. हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. कितना पानी भरा हुआ है इसमें? How much is the water which is filled? How much water? Third, fourth, 3/4. 36 centimeter. Please look carefully. Oh, yes, sir. This is 36 centimeter of the water is being filled. So now when the ray of light comes on it, yes sir, please pay attention. When the ray of light comes on it at an angle of incidence 53 degrees, so ray of light is coming. Hello, and this will be the normal. Achha, angle of incidence is always made with respect to what, sir? What? Bolo? Normal ना? Yes, sir. Normal. ये ऐसे आएगा, ये 53 है. क्या होगा? Ray will bend towards the normal or away from the normal? Come on, fast tell me, Baba. Ray will bend. Denser medium है ना ये तो. Ray will bend. अरे यार बोलो. Away हाँ? Rarer to denser. What will happen? towards the normal. Towards the normal, and suppose it strikes the bottom. Yes. और कोई बता सकता है? ये आपको पता ही रहेगा, ये हाइट 36 है. ये 36 है. तो ये नीचे वाला ट्राइंगल आपको दिख ही रहा रहेगा. Can I call this as A, B and C is the point of incidence? सही है भाई? सही है क्या? ओके. म्यू कितना है? म्यू ऑफ वाटर इज 4/3. म्यू का फॉर्मूला आपने सुना ही है. म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर. म्यू कितना दिया है? 4/3 साइन 53 अपॉन साइन आर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज साइन 53? हेलो बाबा, टेल मी साइन 53 कितना होता है? इफ यू सी द ट्राइंगल, 4/5. this is 4, 3, 5, so it is 4/5 sin r. So this and this will cancel, so sin r is going to become 3/5. Obviously r will be 37 degree. You must be knowing this thing. So this inside angle becomes 37. अच्छा, हमको ये मालूम है ये 36 सेंटीमीटर है. ये डिस्टेंस मिल जाएगा ट्राइंगल से. हेलो, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा ना आपको? यस और नो? हेलो, Yes, sir. look at triangle.
ABC साइन ऑफ 37, नहीं साइन नहीं, साइन काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा? cos 37 is 36 centimeter by hypotenuse. Hypotenuse is going to become 36 centimeter by cos 37. What is cos 37? अगर ये 37 है, cos 37 क्या रहेगा बाबा? 4 by 5, 9 सा 9 5 45 centimeter. Can I say the hypotenuse becomes 45 centimeter? अब मुझे चाहिए time taken to reach the bottom of the vessel. So time in that blue line, okay, time taken to cover AC will become distance AC upon speed in water, because it is in water. Do you all agree with me? Hello? Do you all agree with me this formula? Bolo baba. Yes, sir. So time will become distance AC. Distance AC कितना है? कितना है मिला ना? hypotenuse 45 centimeter. 45. Speed in water. अच्छा, always remember जब भी आपको speed in medium मांगता है, it will be speed in air by mu. ये result आप याद रख लेना. जब भी आपको speed in medium चाहिए, always divide speed in air by that refractive index. So speed in water will become speed in air upon refractive index of that medium. Hello, do you all understand? Did you all understand क्या हो रहा है? Speed in water will be speed in air by refractive index. ये standard result है, आपको आता है mu sin I upon sin R VA by VW. So this will be 45 into 10 is to minus 2 by 3 into 10 is to 8 into 3 by 4. This and this will cancel. So time will be 45 by 4 into 10 is to minus 10. Hello? Yes or no? That answer will become what? बोलो क्या आंसर है इसका? कितना आएगा? Yes sir. 11.25 to 10 raised to minus. Yeah. So this will become, ये 3 cancel नहीं होगा ना? I have done some mistake over here. This whole thing will go up. I have done some mistake over here. This calculation. Hello. ये 3/4 नहीं रहेगा. ये because reciprocal इधर नहीं होगा. This will be 4/3 only. This 3 45 into 4/9. 9 5s are, and will become 20 into 10 is to minus 10 seconds. That will become 2 into 10 raised to minus 9 seconds. That will become 2 nanoseconds. Hello. Hello. Yes or no? Yes. हाँ, ये important है, थोड़ा ध्यान रखो. These all questions are asked in the board examination. Okay. JEE से 1 level नीचे है ये, but boards के लिए perfect question है, which is asked in the examination. चलो आगे बढ़ेंगे. Come to question number 35. अच्छा, बीच में जो भी sums मैंने leave किए, they are all based on other chapter, reflection and all that stuff, mirror and all that stuff. So I'll be doing that, don't worry. I'll be doing everything, but I have broken the chapter into 2 parts ताकि आपको थोड़ा easy हो जाए. अब आपको एक चीज पता है, क्वेश्चन नंबर 35 पर आता है. 35 36 are the same, so I'll solve 35. A crane is flying 6 meters above still clear water. What this is water. A crane is there over here. It's flying how much? 6 meters. बराबर है क्या? Hello. Yes, sir. This is the crane, okay?
for the crane to be, one second, sees the fish underwater, sees the fish underwater. For the crane, the fish appears to be, यहाँ पर लिखना चाहिए, the fish appears to be, the fish appears to be 6 centimeter below. मतलब यहां पर इसको क्या दिख रहा है? हेलो, क्रेन को क्या नजर आ रहा है कि क्या है? फिश है यहां पर. हेलो हेलो, कितना सेंटीमीटर नीचे दिख रहा है उसको? 6 सेंटीमीटर उसको दिख रहा है, उसको ऐसे लग रहा है. दैट मीन दिस इज विच डेप्थ? Apparent depth. रियल डेप्थ ऑफ द फिश विल बी समवेयर एल्स. थोड़ा और नीचे रहेगा, याद है ना, ऊपर दिखाई देता है Yes, जब आप sir. पानी में कोई चीज देखते हो. सो दिस इज एक्चुअली द रियल डेप्थ. हेलो, रियल डेप्थ तो ये है. Come on, come out of your vacation mode, huh, please. Tomorrow vacations are there. Today is not there. So please, okay, पढ़ाई करो. What formula will I use, beta? What formula will I use? Mu is equal to real depth upon apparent depth. Real depth upon apparent depth. Yes. Mu कितना है? पानी का mu 4/3 with respect to air है, तो air का तो 1 ही होता है. Real depth हमको पता नहीं है. Apparent depth is 6 centimeter. So real depth will be how many centimeter, beta? Correct है क्या? Okay, कह रहा है how much deep should the crane immerse to pick up the fish? So really how much crane should go down? 8 भाई actually centimeter. 8 नहीं बेटा, ये तो 6 तो है ना ऑलरेडी, तो एयर हाँ में तो हाँ जितना हाँ. 6 कवर करना पड़ेगा प्लस 8. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. so total depth crane should cover actually should be 6 centimeter in air plus 6. 8 centimeter in So it is 6 meter in air. मीटर है. हाँ मीटर है, ठीक है, ये मीटर है. हाँ 6 मीटर प्लस 8 सेंटीमीटर. हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. So how much deep should the crane immerse? हाँ तो ऊपर से नहीं है ये, दे आर नॉट आस्किंग यू. टोटल डेप्थ इन वाटर ओनली दे आस्किंग यू, तो एयर की बात नहीं हो रही है. टोटल डेप्थ द क्रेन शुड कवर इन वाटर, खाली वाटर की बात हो रही है. तो आंसर विल बिकम व्हाट? हेलो, यस और नो? Yes, हाँ sir. भाई. अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट पार्ट में. फॉर द फिश हाउ मच अबव द वाटर सरफेस डज द क्रेन अपीयर? तो फिश जो यहां से देख रहा है, अब किसको देख रहा है? फिश किसको देख रहा है? क्रेन को देख रहा है. क्रेन का रियल डेप्थ कितना है पानी के बाहर? हेलो, 6 meter. 6 मीटर. ओके, कैन आई से फॉर द फिश? इफ आई टेल यू फॉर द फिश, if I apply mu as real depth upon apparent depth, mu is 4/3, real depth is कितना है? 6 मीटर. apparent depth, so apparent depth will be 18/4 meter. That is, are you all getting it? सही है ना? So shouldn't it be 3/4 the mu? 3 by, एक मिनट, we are doing, yeah, okay. For the fish, see, it will be refractive index of denser medium with respect to rarer medium. Correct है? Hello, yes sir, hello, Yes, sir. what is the formula?
यहां पर फॉर्मूला जो है वो रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज इफ यू आर डूइंग दिस, और इफ यू वांट टू डू म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये फॉर्मूला पता है ना आपको, इज म्यू 2 बाई म्यू 1, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। कैन एनीवन टेल मी where are the rays coming from and where are the rays reaching? Hello, in this case for the fish, where is the rays of light coming from? Baba, tell me. Rays are coming from the crane, na? Hello. Yes, sir. So which will be the second medium and which will be the first medium? This will be the first medium. This will be, hello, रेस कहां से आ रही है बेटा, वो आपको देखना Crane. पड़ेगा ना। या ओके, रेज आर कमिंग फ्रॉम द क्रेन and reaching where? The Fish. fish. Okay. So can you tell me what will be mu 1 and what will be mu 2? जल्दी बोलो। हाँ भाई, अरे जल्दी बोलो यार। Mu1 air mu 1 is air and and mu 2, Mu2 is water. mu 2 is water. अच्छा, what will be the real depth and the apparent depth? हाँ ठीक है, काम करो, इसको इस मेथड से नहीं करते हैं आप लोग, दूसरे मेथड से ही करो ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। देखो हम लोग इसकी बात करते हैं, पहले पहले जब हमने फिश की बात की, फॉर द फिश व्हाट इज म्यू का फॉर्मूला? रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। दिस वाज refractive index of second medium with respect to first medium, इसको लिख सकते हैं mu 2 by mu 1, which was real depth upon apparent depth। बराबर है? हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब एक काम करो, consider this to be medium 1 and consider this to be medium 2 always। तो यहाँ पर mu 2 कितना लिया आपने? 4/3 लिया, mu 1 तो 1 ही रहेगा, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। गेटिंग इट क्लियर? हेलो, ये समझ में आ रहा है था? अब आप मुझे बताओ कि अगर हम फिश की बात करेंगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स रिवर्स करना पड़ेगा चीजों को। तो दिस होल रिलेशन विल बिकम mu 1 by mu 2 will become real depth upon apparent depth। हेलो, यू हैव टू रिवर्स द रिलेशन ना। Yes, sir. सो mu 1 कितना है? 1 है। mu 2 कितना है? यस, 4/3. 4/3। what is the real depth? 6। so apparent depth is going to become 6 into 4/3। apparent depth will become what sir? कितना हो जाएगा? 8 मीटर। Got it? Hello, you just need to reverse the relation. I'll teach you another trick for this also. See, if there's water and there is a fish over here at a height h, so it will be seen to a outside person, will be seen to a bird. Suppose a bird is there, it will be seen to the bird at a height of h by mu. This will be real, this will be apparent. Similarly, if the fish looks at crane at a height h, this is the real. He will see the bird at mu h. He will see the bird at किधर बेटा?
How much? Mu h. So he will see the bird mu times, and the crane will see the bird divided by mu. हाँ भाई, you know the ray diagram ना? I've done the ray diagram in the video recording. ठीक है? Hello, getting it? Okay, तो ये चीज याद रखना, इसके ऊपर और एक सम आएगा which we'll be doing again. See, what is I'm telling you? One second. 36th one. A glass slab of thickness 2.5 centimeter has refractive index 5/3, kept on an ink spot. A transparent beaker of a very thin bottom containing water up to 8 centimeter is kept on the glass block. So there is a glass block. सुनो हाँ मेरी बात है. उसका refractive index is given as 4/3. नहीं 5/3. And 2.5 सेंटीमीटर. इसके ऊपर हमने एक बीकर रख दिया जिसके अंदर हमने पानी भर दिया. कितना थिकनेस तक पानी भरा है? 8 सेंटीमीटर तक. एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? 4/3. हेलो, यस और नो? हेलो, Yes, sir. कैलकुलेट द अपैरेंट डेप्थ ऑफ द इंक स्पॉट व्हेन सीन आउटसाइड. तो यहाँ पर नीचे है ना एक इंक स्पॉट है, यहाँ पर एक इंक स्पॉट है. कह रहे ये कितना ऊपर दिखेगा. तो वी हैव डेवलप्ड अ रिजल्ट दैट बेटा फिश कितना ऊपर, आपका आंखें किधर है? इधर है ना? हेलो, यस और नो? Yes, sir. Can I say due to one medium, if there is a coin over here at a height h in a medium, अभी मैंने सिखाया कितना ऊपर दिखता है कॉइन? H by mu. h by mu. करेक्ट है? हेलो, Yes, sir. कितने स्लैब्स हैं यहाँ पर? कितने स्लैब्स है बाबा? बोलो. There are two things ना, there are two refractive indexes. बोलो बाबा, yes or no? Yes, sir. There are two refractive indexes. One is of glass slab and other is of water. तो इन दोनों के कारण ऊपर आएगा वो. Yes or no? अरे बाबा, tell me yes or no? Yes, sir. Now, okay. How many times refraction is happening? Can anyone tell me? How many times refraction is happening? Refraction 2 times. 2 times. One through the Water. glass slab, another Glass through the slab. Water. water. बराबर है क्या? हेलो. अच्छा, और एक बात मुझे बताइए, इन दोनों के देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे अगर हम, so who is the rarer medium and who is the denser medium? Who is the rarer medium and who is the denser medium बेटा? अगर हम वाटर को देखें और ग्लास को देखें, वाटर को देखें और ग्लास को देखें, कैन एनीवन टेल मी हु इज द रेयर मीडियम एंड हु इज द डेंसर मीडियम? जल्दी बताओ. हाँ भाई. Glass is denser, हाउ डिड यू कम टू नो? more refractive index. मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. तो अच्छा, रे कहां से कहां तक जा रहा है? अभी रे कहां से निकल रहा है? कैन एनीवन टेल मी वेयर इज द रेज इमर्जिंग एंड गोइंग? Where is the rays emerging and going? The rays are emerging initially from ink spot. Hello? And they are going from glass to क्या भाई? देखो, एक रे तो ऐसे सीधा जाएगा, दूसरा रे ऐसे जाएगा, and
It will bend towards the normal or away from the normal? जल्दी बताओ. अरे बाबा, tell me. Away. Away from the normal it will bend. ये जो रेस पीछे दिखाई देगी वो इधर दिखाई देगी. Can I say this will be the ink spot which is seen due to first refraction? So can I say due to first refraction, if I apply the formula mu is real depth upon apparent depth? Hello? बोलो. Yes or no? अच्छा, इसको लिख सकते हैं म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर, दैट इज म्यू डी बाई म्यू आर आर डी बाई ई डी. म्यू डी कितना है? डेंसर का कितना होता है? 5/3 अपॉन 4/3. रियल डेप्थ इन ग्लास लैब, ग्लास लैब, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग फर्स्ट रिफ्रैक्शन. रियल डेप्थ कितना है इसका? 2.5. तो अपैरेंट डेप्थ कितना रहेगा इन ग्लास लैब ओनली ड्यूरिंग फर्स्ट? ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4. तो अपैरेंट डेप्थ विल बिकम 2 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये कितना सेंटीमीटर है बेटा? हेलो? 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर है. ओके, अब रेस कहाँ चली गई है? अब रेस कहाँ चली गई है? कम ऑन टेल मी फास्ट. रेस आर गॉन वेयर? इन Water. water. Now second refraction will happen. Where it will happen? At which interface? Water air interface. Hello? This was which interface? First refraction? Glass water interface. बोलो. हेलो? थोड़ा ये ऐसे कर देते हैं so that you all can understand. ये तो हो चुका. और I'll just manipulate a little so that you all can understand the diagram. थोड़ा और ऊपर ऐसे कर देते हैं. ये ऐसे क्लियर है ना? अब यहां से क्या होगा? यहां से रेज आ रही है. अभी ये यहां से रेज आ रही है ना बेटा? हेलो? ये इधर जाएगा, ये तो रेज सीधा ही निकल जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा फिर से. तो ये जो है ये और ऊपर दिखाई देगा. हेलो? गॉट इट? एंड जनरली द आई शुड बी in the field of view. So I'll just tell you the eyes are here. अरे क्लियर है ना? समझ में आ रहा है क्या? हेलो? अच्छा, now which interface we are talking about? बोलो. Water air. Water air interface. Who is the rarer medium and who is the denser medium? Now air is the rarer and water is the, बोलो, Denser. denser. फिर से वही फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू डी आर is real depth upon apparent depth. हाँ बाबा, this is mu d by mu r, real depth upon apparent depth. mu d कितना है? 4/3 है. mu r तो 1 है because air है. अच्छा, can anyone tell me now what is the real depth of the coin? Real depth of the coin कितना है? हाँ बोलो, सही है, बोलो सही है. Yes, 10. कैसे मिला 10 आपको? 2 + 8. 8 तो ऊपर का पानी का था, प्लस इनिशियली इट वाज सीन एट 2 ना. हेलो? तो रेज यहां से निकलेगी ना, ये 2 अपॉन अपैरेंट डेप्थ. सो अपैरेंट डेप्थ विल बिकम, क्या हो गया? 4/3, सॉरी 3/4 of 10. 3/4 of 10, that is 7.5 सेंटीमीटर. तो जो इनिशियली फ्रॉम द सरफेस 10 पर था, अब वो 7.5 दिखाई देगा.
Getting it? Hello? Yes, Yes or sir. no? So it will be seen at a distance of 7.5 from the surface. इसका एक shortcut भी है, directly you can apply. Okay. जब बहुत सारे mediums रहेंगे, when many mediums are there, you can apply the formula. Apparent depth is d1 upon mu1 plus d2 upon mu2. ये shortcut है. अप्लाई करके देखेंगे. हेलो, व्हाट इज d1? डेप्थ 1. पहले वाले का डेप्थ कितना है? चलो बोलो जल्दी. हेलो यार, पहले वाले का डेप्थ कितना है? 2.5. उसका म्यू कितना है? 5/3 प्लस d2 कितना है? 8 सेंटीमीटर एंड उसका 4/3. गेटिंग इट? ये हो गया 2, ये हो गया 3/2 प्लस 4 2 6. तो दिस विल बी अगेन 7.5. आपको दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. can you see the shortcut? Directly you will get. So this is generally used in the IIT. d1 upon mu1 plus d2 upon mu2, where the ray is going from denser medium to rarer medium. Ray going from denser to rarer. Clear है क्या? अच्छा, if the ray is going from rarer to denser तो क्या करेंगे? तो ये शॉर्टकट क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है? हेलो यार, ये शॉर्टकट, दिस इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ऑब्वियसली द apparent depth will be less ना, d by mu. बट अगर रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, आपको क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? यार बोलो. यस, mu by d. म्यू बाई डी नहीं, म्यू डी. रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर in any medium, so apparent depth directly क्या हो जाएगा? mu1 d1 plus mu2 d2. हेलो, बस ऊपर दिखाई देगा ना आपको तो. हेलो, yes or no? Yes, sir. Remember all these things, please. You'll not be able to get it otherwise. Now we'll come to question number 46. Is very important. 45 and 46 are the same. Then we'll go to prism questions. Okay, look over here now carefully. This is based on critical angle. Critical angle. Figure shows. अच्छा, यहाँ पे फिगर नहीं बनाया, मैं पहले फिगर बना देता हूँ. ABCD. Okay. This is 4 and this is 2 cm and this is 3 cm. कितना दिया है? This is the normal. Okay. ये मिल गया? हेलो, अच्छा चलो स्टार्ट करेंगे. फिगर शोज बिलो अ सेक्शन ABCD of transparent slab. There is a green LED light source at the bottom of the left corner B. So there is a green LED light source यहाँ पर. ये green, हेलो सबको दिख रहा है? LED Yes, sir. source at the bottom of the left corner. Certain ray of light at B from B suffers TIR at point P. So ये point P है. TIR होता है. TIR मतलब क्या? TIR मतलब क्या? Total internal reflection. अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है?
For TIR, yeah, tell me. Angle of incidence is greater than equal to critical angle. Angle of incidence should be greater than critical angle, and the ray should be going from second denser to rarer. हेलो, ये दो reasons है, बराबर है क्या? हेलो, पता होना चाहिए. तो कैन आई से ये जो एंगल रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर will obviously be greater than critical angle. बोलो बोलो. At point P and strikes the surface CD at point Q. So ये point Q है. Determine the refractive index of the material. मतलब क्या निकालना है हमको? म्यू फाइंड करना है. At Q will the ray suffer TIR or partial? So at Q what will happen? Q पर क्या होगा? ये दो questions है which are asked. अच्छा, कोई बता सकता है मुझे ये एंगल कितना रहेगा? एंगल बी कितना है? ये एंगल कितना है? 53. How did you come to know? Pythagorean triangle. पाइथागोरन ट्रायंगल. ठीक है, ये 53 है, ये 53 है. तो बेटा ये कितना है? 53. ऑल्टरनेट. हेलो, Yes, sir. अरे बाबा, टेल मी और नॉट. ये भी 53 है बिकॉज रिफ्लेक्शन हो रहा है. आपको तो पता है ना रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर द आर द क्या सेम? हेलो. Yes, sir. अच्छा, तो कोई बता सकता है ये एंगल कितना रहेगा? ये एंगल कितना रहेगा? जल्दी बोलो. 37. 37. तो ये भी कितना रहेगा? 37. 37. हेलो, इतना तो पता लग गया. इतना पता लगा कि नहीं? अरे बाबा, तो सब एंगल्स हमने ढूंढ लिया. अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? जल्दी बोलो. और क्रिटिकल एंगल जल्दी बोलो. कैन आई से व्हाट इज द फॉर्मूला? साइन सी इज 1 upon refractive index of denser with respect to rarer. याद है? याद है कि नहीं? लो यार, प्लीज रिप्लाई. यस और नो? यस और नो सर? Yes, sir. नो. कैन एनीवन टेल मी? यहां पर क्रिटिकल एंगल हमको क्या लेना है? ओके, there is no other data given. Can I take the critical angle as 53 degree? Or here, suppose if I consider the critical angle as 53 degree, मेरी बात सुनना यहाँ पर, 1 upon mu. What is sin 53? What is sin 53? क्या रहेगा? बोलो. 4/5. 1 upon mu. So mu should be क्या भाई? क्या हो जाएगा mu? 5/4. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात बताओ. I is greater than C. यहाँ पर ये एक्चुअली I था, बट हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है because we don't have C over here. We don't have C. So I have taken this only as C. Okay? हेलो, yes or no? या तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखो, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करने का. कैन आई से फॉर TIR to happen, look carefully. What am I doing? For TIR to happen, you have told me what? I should be greater than C. So can I say sine I should be greater than sine C? So sine I should be greater than 1 upon mu.
So can I say sine 53 should be greater than 1 upon mu? That is 4 by 5 should be greater than 1 upon mu. So mu should be greater than what? 5 by 4? Hello? बोलो. हेलो, मतलब मिनिमम म्यू कितना होना मांगता है? 5/4. ये समझा आप लोग को? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. म्यू मिल गया अभी, म्यू मिल गया. सो कैन एनीवन टेल मी, यहां पर क्रिटिकल एंगल मिनिमम कितना पकड़ा है हमने? साइन सी इज 1 upon mu, that is 1 upon pi by 3, that is 3 by 5. Can I say critical angle कितना रहेगा? बाबा टेल मी, क्रिटिकल एंगल कितना रहेगा यहाँ पर? 3 by 5 कितना होता है C का वैल्यू? अरे बाबा टेल मी यार, कितना होता है? 37 डिग्री होगा ना? हाँ भाई, सॉरी 1 upon म्यू, म्यू कितना रहेगा? 5/4 रहेगा. आई एम वेरी सॉरी, ये 5/4 हो जाएगा. हाँ, तो ये 4/5, so this will become 53 डिग्री only what we got. अच्छा, इस फेस को देखो इधर. Is the angle of incidence lesser than critical angle or more than critical angle? Hello? At Yes. Q, angle of incidence is lesser than critical angle. So there will be no TIR. There will be partial reflection. थोड़ा सी reflection होगा. And there will be partial refraction also. So what will happen? Partial reflection and refraction will happen. There will be no TIR. There will be partial reflection and refraction. Did you understand? हेलो बाबा, समझ आ रहा है? चलो, we'll come to 73rd sum. Okay, 2 questions more and finished. A monochromatic ray of light is incident at 30 degrees to an equilateral prism. Pay attention over here. This is prism sums. This is the ray of light. 37 degrees to an equilateral prism, मतलब ये 60 degree है. This is A. Refractive index of the prism is 3/2. Determine the angle of emergence. If the angle of prism is adjustable, what should be the value of emergent ray to be just possible for the same angle of incidence? Okay, first हमको find करना है कि angle of emergence कितना रहेगा, मतलब this value. This is R1, this is R2. We have all the formulas. Acha, one more thing, we know that this is the first phase and this is going to be the second phase. I'm starting for the first phase. I will apply the formula mu is equal to sine I upon sine R1. You can see R1 is the angle of refraction in the first phase and this is the value of I. बराबर है क्या? Mu कितना है? 3/2 sine 37 sine R1. So this will be 3/2. Sine 37 is 3/5 sine R1. So this will cancel, will become sine R1 will become 2/5, that is 0.4. So R1 is going to become sine inverse of 0.4. Okay, sine inverse of 0.4, you can do it by calculator. Okay, and
right now when I'll teach you, you'll come to know. That is 23 degree 39 minutes. ये मिल जाएगा आपको R1 का वैल्यू. This is step number 1, first phase. Step number 2, you know A is equal to R1 plus R2. What is A? 60 degree. R1 is 29 degree 39 minutes and plus R2. So R2 will become 60 degree. 60 degree को लिख सकते हैं 59 degree 60 minutes minus 23 degree 39 minutes. So this could also be written as 36 degree 21 minutes. R2 मिल गया. ये steps आपको याद रखना है. Step number 3. Now I come to the second phase. What is the formula? Mu is sine of angle of E upon sine of R2. Always remember it will be from rarer to denser, because mu is written for rarer to denser over here. Otherwise mu ulta हो जाएगा. So mu will become 3/2 sine E sine R2, but R2 हमको मिला 36 degree 21 minutes. So 3/2 sine E sine 36 degree and 21 minutes is 0.5927. Sine E will become 1.5 times of 0.5927. So sine E is going to become 0.889. और उसका फिर से कैलकुलेटर, you can turn upside down your mobile, keep it horizontal, so sine function सब आ जाएगा. Normal calculator आपको आता ही रहेगा, you are expert. So E will become sine inverse of 0.889. This answer will be 63 degree approximately. 62 degree कुछ आएगा. This is 63 degree approximately. तो सबसे पहला आंसर, what should be the angle of emergent ray? Okay, and the angle of deviation वो हम फाइंड करते हैं. सबसे पहले हमको angle of emergence मिला. अभी angle of deviation they are asking you. Angle of deviation मतलब delta. You have heard about the formula A plus delta is equal to I plus E. A is 60, delta हमको पता नहीं है. I कितना पता लगा हमको? I हमको पता लग गया 37 degree था. And E was how much? 63 degree. ये हो जाएगा 100 minus 60. So delta, that is deviation, will become 40 degree. This is a very, very important question because it covers all the perspectives of the prism. Hello. इसको step 4 पकड़ लेते हैं. ठीक है? Getting enough? First phase, A is R1 plus R2. Second phase, and then A plus delta is equal to I plus E. समझ में आ रहा है क्या? Hello. Hello. Yes, sir. Now next part. It is not over. Yes, sir. What should be the value of emergent ray to be just possible for the same angle of incidence? Okay. What should be its value for the emergent ray? मतलब किसका वैल्यू हमको मांगता है? A का वैल्यू हमको मांगता है, एंगल ऑफ प्रिज्म का. For the emergent ray to be just possible. अब मेरी बात सुनो, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं. I'm rubbing all these things. If you want to take screenshot, you can take. I'm rubbing this thing again. Okay. ठीक है. यहाँ पर सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि दिस ए विच इज देयर इज एडजस्टेबल. इस ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है, सो दैट व्हेन द रे ऑफ लाइट कम्स, दिस इज R1, दिस इज R2, एंड द रे इमर्जेंट रे इज जस्ट पॉसिबल. जस्ट पॉसिबल मतलब जस्ट वो बाहर आया है. हेलो, दिख रहा है क्या? हेलो, मतलब कैन आई से एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है? 90 है. अरे भाई सही है ना? हेलो. फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये कितना डिग्री है? 37 डिग्री. बाबा टेल मी, बाबा टेल मी. तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, वही चीज करना है. ये कौन सा फेज है? सेकेंड फेज.
देखो आप फर्स्ट फेज पे तो कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, तो फर्स्ट फेज पे अगर हम ऑपरेशन करते हैं वही फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो म्यू तो वही वैसे का वैसे ही है 3/2 साइन आई साइन 37, तो साइन R1, तो R1 आपको वही मिलने वाला है जो पहले मिला था। हेलो, R1 आपको क्या मिला था पहले 36 डिग्री 21 मिनट्स, यस और नो? ये तो वैसे का वैसे ही मिलेगा। नाउ आई विल गो टू द सेकंड फेज। व्हाट फॉर्मूला वी हैव, म्यू इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन R2, म्यू इज 3/2, साइन ई इज साइन 90 sin R2, so sin R2 will become 2/3, that is 0.666, so R2 will be sine inverse of 0.667, that is 41 degree 48 minutes। एकदम आसान है कैलकुलेशन करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but when it opens now you will become more clear। How can I explain it on the, okay, this one, so 41 degree 48 minutes। अच्छा, what is A का फॉर्मूला now थर्ड फेज? अगर हम A का फॉर्मूला देखें तो become R1 plus R2, that is 36 degree 21 minutes plus 41 degree 48 minutes, so this answer will come, कितना आ जाएगा देखो 7 77 एंड 69 मिनट्स। अच्छा 69 मिनट्स में से 60 मिनट्स लेकर इसको दे दूं तो ये हो जाएगा 78 डिग्री, बराबर है ना भाई? मैंने कुछ Yes, sir. गलती कर, ओके, गेटिंग इट और नॉट? हेलो, Yes, एक sir. मिनट, R1 का वैल्यू कितना आया था? आई एम वेरी सॉरी, R1 का वैल्यू वाज रॉन्ग, R1 का वैल्यू is coming up to be 2329, this is 2329, ये ठीक है, ये 2329 है, दिस विल आल्सो बी, ये कितना हो जाएगा एडिशन करके बोलो? 3 and 1 4 into 63 डिग्री एंड 60, बराबर है क्या? कितना होता है ये? 8 16 17 77। हेलो, अब इसमें से आप 60 मिनट्स उधर ले लो तो ये हो जाएगा 65 27 minutes। हेलो, so if you adjust this angle to 65 degree 27 minutes, so the ray, emergent ray will be grazing, what is the technical word over here? Grazing along the second phase, clear है ना? हेलो हेलो, yes or no? This is how you do the question. Now the last question which I'll be discussing, the last question, for a given data calculate angular dispersion and dispersive power। कोई बता सकता है एंगुलर डिस्पर्शन का क्या फॉर्मूला है? हेलो, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा का फॉर्मूला पता है ना, ए म्यू माइनस 1, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ओके? हेलो बाबा, टेल मी, हेलो, यस और नो बोलो Yes, यार। sir. ओके, नाउ क्या ए आपको पता है? देखो जरा, ए आपको पता है क्या? ए आपको पता नहीं है, आपको डेल्टा आर पता है, यहाँ पे डेटा देखो जरा, म्यू आर म्यू वी डेल्टा आर। अच्छा, फॉर रेड कलर आई जस्ट डू फॉर रेड कलर, पहले उसे ए ढूंढना पड़ेगा वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता है। कैन आई से डेल्टा, दिस फॉर्मूला डेल्टा आर ए विल बिकम ए म्यू आर माइनस 1, सेम दिस फॉर्मूला। डेल्टा आर कितना है? 3.1 डिग्री, ए म्यू आर 1.62 माइनस 1,
0.62. Hello, Baba bolo. This will go 5 times. A will become how many degree? 5 degree. 5 degree बहुत कम है. That means it is which prism बेटा? बोलो. Thin prism. Thin prism. अब हमको A का वैल्यू तो मिल गया. यहाँ पे we'll put pi. म्यू वी कितना है? 1.66 दिया हुआ है, माइनस म्यू आर 1.62. So this will be 5 into कितना होता है? कितना होगा? 0.04 4. बराबर. Yes, sir. कितना हो गया ये आंसर? 0.2 डिग्री. 0.2. ये मिल गया. I got angular dispersion. Similarly, if I need dispersive power, that is omega. What is the formula? बोलो. Delta V minus delta R upon delta of yellow color. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. बोलो कैसे लिखेंगे? म्यू दिया है ना मुझे तो. अरे बाबा मुझे तो म्यू दिया है, तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन डेल्टा इज ए म्यू येलो माइनस 1. ये ए और ये तो कैंसिल हो गया. दिस विल बी म्यू वी माइनस म्यू आर. म्यू येलो को लिख सकते हो म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 minus 1. Did you understand this formula? This all we have derived, huh? Hello. Yes, sir. म्यू वी कितना है? 1.66 minus म्यू आर is 1.62. म्यू वी प्लस म्यू आर is 1.66 plus 1.62 divided by 2 minus 1. बोलो बाबा. ये ऊपर कितना हो जाएगा? 0.04. दिस विल बी 1.64. बीच में का नंबर है ना, एवरेज है ना. हेलो हेलो. Yes, sir. -1. One by 16. That is 0.0625. This is what dispersive power. मतलब इतना मोड़ने का ताकत it has. Dispersive power ना, disperse करने का ताकत. Did you understand all the formulas? Hello? Hello? बाबा, yes or no? Yes, sir. एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं. देखो सबसे पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि how much time does it take to travel through glass slab. So I have given you time taken to travel through glass slab as distance in glass slab upon speed in glass slab. Distance in glass slab, speed in glass slab. Always remember, whenever anything happens in speed in the glass, divide the answer of speed and light by mu. So the shortcut came up to be mu x by c. Second sum which I did was based basic on trigonometry and time only. Mu is sin I upon sin r. Third sum we did of the crane and the fish. तो fish ऊपर दिखाई देगा by h by mu and crane और ऊपर दिखाई देगा with mu h. Getting it? Hello. Yes, sir. Then we have done this sum, same sum it was there coin के लिए. अगर दो रह गए तो you can apply directly formula d1 by mu1 plus d2 by mu2. Okay, LED bulb is the same. We have done after that this sum, and आपको पता चल गया critical angle कितना था. उसके हिसाब से आपको पता चलेगा whether TIR will happen or not. And then we have done prisms, step 1, step 2, step 3, first phase, second phase. A is R1 plus R2. Last sum which we have done was based on angular dispersion and dispersive power. ठीक है? Thank you. Enjoy your vacations. Bye. ठीक है? Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, बेटा. Bye. Bye, sir. Thank you.